Hello friends, welcome back to the channel Free Learning. I hope you all are doing well and I am your facilitator Shabnam Ara. So today's topic is verb. So let's get started. Let's see. Verbs are two. One is main verb and the second one is helping verb. Helping verb is used to show the tense of the sentence. सेंटेंस का जो टेंस है वो किस टाइम का है, प्रेजेंट टाइम में है, पास्ट टाइम में वर्क हो रहा है या फिर फ्यूचर टाइम में वर्क हो रहा है. अंडरस्टूड. बट द मेन वर्ब इज व्हाट? मेन वर्ब आल्सो यूज्ड टू डू द एक्शन. जो भी सेंटेंस का मेन वर्क है, जो एक्शन है, जो डूइंग वर्ब है, वो हमारा मेन वर्ब होता है. लाइक आई एम टीचिंग नाउ. So teaching, teach is main verb. So reading, read is main verb. And writing, learning, walking, all these action words are main verb. And the helping verbs always use it, they shows the tense of the sentence. Sentence के tense को दर्शाता है helping verb. सो हेल्पिंग वर्ब को हम जब कैटेगराइज करते हैं तो इनके 4 कैटेगरीज बनते हैं. द फर्स्ट वन इज वर्ब टू बी एंड द सेकेंड वन वर्ब टू डू, थर्ड वन वर्ब टू हैव एंड रेस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट वर्ब टू बी. वर्ब टू बी इज हियर एम इज आर, वॉज एंड वर. सो दीज 3 आर used in present tense for the present tense sentences and these two used for the past tense sentences, was and were. Now let's see the second type is verb to do. In this category comes do, does and did. So do and does refers to the present tense. Do or does present tense में use होता है. Do is plural number helping verb and does is the singular number helping verb. And as usual did is used to the past tense. Past tense में only one helping verb है जो कि did है और वो past tense के sentences में use किया जाता है. Right? Now come to the next. Number 3 is verb to have. Here also the 3 has, have and had. Has, have and had. So has and have. Has is used for the singular number noun, for the singular number subject, and have is used with the plural number subjects in present tense, right? And had is used with the both singular and plural number subjects in past tense. Past tense में singular and plural दोनों subject के साथ only had जो है वो use होता है. But has and have these are both two हैं, इनको singular and plural accordingly use किया जाता है in present tense only. Okay, so now let's see the 4th number, modal verbs. There are so many modal verbs. So we will discuss about modal verbs later, but here I am giving some examples of modal verbs. This is will, shall, can, could, would, may, must and should. So verb transitive, and intransitive. So transitive and intransitive. Difference between transitive and intransitive we are going to discuss here. So
ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द सेंटेंस, द वर्ब विद ऑब्जेक्ट, पिन पॉइंट थिंग इज कीप इन माइंड, अपने याद रखने की जो चीज़ है वो ट्रांजिटिव वर्ब ये है कि जो सेंटेंस, जो वर्ब सेंटेंस का विद ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव है, एंड जो विदाउट ऑब्जेक्ट है वो इंट्रांजिटिव है. लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल. Birds fly. So birds, we know the subject, but fly is verb. But after fly here is not given any other verb. कोई भी वर्ड नहीं है यहाँ पर जो जिसको कि हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में डाल सकें. So without object, if the verb is there in the sentence, so it is intransitive. It means it is intransitive. ये intransitive है, without object, verb without object, intransitive. Keep it in mind. And the second example I am going to write, Mary Kom won the bout. Mary Kom won the bout. So let's see here. Mary Kom won the bout. So what is verb? Verb is won. So verb is won, and after verb here is written the bout. So when we ask the question, जब हम question पूछते हैं what के through, what Mary Kom won, so then we will receive the answer the bout. It is transitive. So जब when we ask the question by what, by using what, कि मैरी कॉम ने क्या जीता, मैरी कॉम ने बाउट जीता, तो बाउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वोन. वोन का ऑब्जेक्ट बाउट है, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव. क्लियर? सो वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव विद यू ऑल हियर. शी लाफ्ड लाउडली. शी लाफ्ड लाउड. हाउ शी लाफ्ड? लाउड. बट laughed is verb, but here is given loud after laugh. वर्ब के बाद loud है, loud इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. loud जो है वो एडवर्ब है, वो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे वो हंसी. सो दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट एट ऑल. इट मीन्स इट इज ऑल्सो इंट्रांजिटिव. क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल. I love my dog. I love my dog. So I love. Love is verb. What you love? My dog. So the answer, my dog, is object. It means it is transitive. So that's all for today's video. I hope you all are having liked the video, and if you have any opinion regarding the video, so please tell us in comment box. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of new video. Hit the like button and share with your friends. Thanks for watching Free Learning. Jai Hind.